Okay ji, now is the time to add the enemies, and if your hero touches the enemy, the game is over. If the hero successfully jumps over the enemy, we are good. So हमारे पास कुछ images already थे assets के folder में. I could probably use this bee as an enemy, or I could use this UFO thing as an enemy. So हमें ये दो enemies बनानी पड़ेंगी. इसमें हमने कोई खास काम नहीं करना सिवाय इसके कि the enemy will be just walking towards us. So एक मूव का स्क्रिप्ट होगा, एक कोलाइडर होगा, और रिजिड बॉडी क्योंकि ऑलरेडी हमारे हीरो में है तो रिजिड बॉडी हमें दरकार नहीं होगी, लेकिन वी वांट कि जब ये एनिमी एज पे पहुंचे तो वहाँ से नीचे गिर जाए. सो उस गिरने के लिए हमें इसमें रिजिड बॉडी भी ऐड करनी पड़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट. इस एनिमी को मैं पहले यहाँ प्लेस करता हूँ, एंड द इमेज इज अ लिटिल टू बिग, सो लेट्स रिड्यूस द साइज टू this much. This looks decent with respect to the hero. फिर इस image के ऊपर I will add a box collider, and I will add a rigid body 2D, and I will add a script which is called enemy script. और इस enemy script में कोई खास काम नहीं करना, हमने simply इसको move करना forward. As I told you, move करने के लिए भी दो काम किए जा सकते हैं. I could use a translate, or I could say get component rigid body 2D, और इसमें हम y पे force add कर सकते हैं. dot add force, x में 0 और y में left पे जाना है तो minus 50f maybe. So let's see कि ये हमें न्यू वेक्टर 2 के साथ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये एक 2-dimensional वेक्टर है. सो दिस कोड इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम हमारा जो नॉर्मल ट्रांसलेट का कोड होता है. सो अब इसको चला के देखते हैं कि भाईजान ये चलता है कि नहीं. सो विद द ऐड फोर्स दिस फेलो इज नॉट मूविंग टू द लेफ्ट. सो हम क्या कर रहे हैं, एनिमी स्क्रिप्ट में हम एडिंग लेट्स से 200 की फोर्स, x y rigid body डाली है ना हमने इसमें. yeah, we do have a rigid body 2D. let's see again. so actually हो ये रहा है कि my slab is moving, so maybe I can just go back to the translate code. On every update I'm adding a lot of force, so it should actually try to move. अच्छा सॉरी, y में नहीं करना ना, इसको x में करना है. सो ये नीचे पुश कर रहा है इसको. सो आई वांट इट टू बी negative 40f, let's say, on x axis. Mistakes. So minus 40 is too much. Let's go back and turn it to like minus 5, because it is happening several times a second, so it's not going to be required to have a lot of If I don't add a force, what happens? If I don't add a force, it will stay there and the slab will actually move away, which is not required. So I could do it like 0.5 maybe. The force is there, so you just have to play around with the right value. 0.5 is actually too less. Minus 2 is going to be just okay. Actually, add force is adding force several times a second, so maybe I could probably dot velocity is equal to new vector 2 और इसका minus 50. So इसकी velocity हम negative x में कर देते हैं. Velocity is this actually speed in a given direction, so it is going to be to the left. This looks just fine. So if your velocity, दोबारा check करते हैं. If the velocity is set to negative 5, yeah. So the speed of the enemy looks good. अब मैं क्या करूँगा? I will check if my enemy is touched. So if my hero touches the enemy, the game is over. So I go back to my hero script again. और यहाँ पे आपको याद होगा कि टक्कर लगने से हम करते होते थे
ऑन कोलिजन एंटर, और अब के हम करेंगे ऑन कोलिजन एंटर 2D का कोड, और ये भी हम चेक कर लेंगे कि अगर कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट का नाम इट स्टार्ट्स विद एनिमी, तो फिर हम ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे. सो इफ कोलिजन होने वाले ऑब्जेक्ट का नाम एनिमी से शुरू होता है तो आप गेम ओवर कर दीजिए. गेम ओवर करने के लिए हमें यहाँ भी यही काम करना पड़ेगा, दैट वी से सीन मैनेजर डॉट लोड सीन गेम ओवर. सो इस काम के लिए ज़रूरी ये है कि आपके एनिमी का नाम एनिमी से शुरू होता हो. सो इसका नाम अभी फ़िलहाल हमारा एनिमी नहीं है, इसका नाम UFO समथिंग है. तो इसको हम रीनेम कर देते हैं टू एनिमी. And also you can see that the enemy has gone invisible क्योंकि इसका layer index भी 0 था. So I will go to the properties of the same enemy and change the order in layer to 1, and you will say that this fellow is here. So if I run the game now, your enemy is there, and when you hit, the game's over. When you hit, the game is over. Wonderful. But if you jump over, then it still collided, right? So इसका collider थोड़ा छोटा होना चाहिए. नहीं, this is fine, I think. So what I'm going to do now is कि ये मेरी enemy है, इसका collider I agree थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. Box collider 2D में इसका इसका Y size भी थोड़ा कम कर लेते हैं, और इसका X size भी थोड़ा कम कर लेते हैं, so that we have edges जहाँ से हम probably escape करके चले जाएं. So if I run it now, it will still game over when you hit it, but if you jump over, you're good, right? So what I'm going to do now is I will literally get this fellow, which is your enemy, and duplicate it around on different places like that. अच्छा, अब the good news is कि I will be able to put these hard-coded positions of the enemy, but the bad news is कि ये enemy will start moving जैसे ही आप गेम को रन करते हैं. You will understand जब मैं इसको जरा चला के आपको दिखाता हूँ. So हर स्लैब पे तकरीबन यहाँ पे तो हम 2 डाल देते हैं, because this is sort of a final thing. So basically जब मैं गेम चलाऊंगा तो you will see the enemies coming in and you will jump over, लेकिन उनमें से कई enemies ऐसी हैं जो oh come on the enemies which are not falling down. Why? So एक तो enemies keep coming to you. Wow. So it's not falling down because every time you're changing the velocity in X and you're not applying any velocity in Y. So I'll prefer कि मैं enemy script में जाके इसको change कर दूँ तो transform dot translate ही कर देते हैं इसको. X में minus आपका slab कितना move हो रहा है? 0.07. So it should be slower than the slab, and it should be faster than the slab. So it should be 0.07 की जगह 0.1 कर लेते हैं इसको. Let's see how this looks. X में this, Y में 0, C में 0, और rigid body से फिर वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा. Let's run this to see if the enemies are working. So ये मसला तो probably यहाँ से हल हो जाएगा कि ये एनिमी जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरना शुरू होगी. लेकिन एक प्रॉब्लम ये आया कि जब तक आप यहाँ पहुँचे, यहाँ की एनिमीज पहले से गिर चुकी हैं. सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक आप एनिमी के पास ना पहुँचें उसको मूव नहीं होना चाहिए. एक्चुअली मूव होना चाहिए, लेकिन उसी स्पीड से मूव होना चाहिए कि वो स्लैब के ऊपर खड़ी रहे. सो हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि ये जो ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसलेट हमने एनिमी का लगाया है, it depends on a distance between hero and the enemy. So the point is कि जब आप यहाँ देखें
जब आपका हीरो इतना नज़दीक आ जाए, सो राइट नाउ इसकी पोजीशन है x में -6 और इसकी पोजीशन है 3, सो -6 + 3 इज अराउंड 9। जब आपका डिस्टेंस अराउंड 8 का रह जाए तब the enemy should start moving faster than the slab. Otherwise, it should move exactly the same as the slab. उसके लिए आप क्या करना होगा? You will have to check if vector, I don't know, vector 2 dot distance होता है इसमें? नहीं, हाँ होता है. Distance between my position, I'm the enemy, and the hero position. So every enemy should know the hero. So hero dot transform dot position and transform dot position. So मेरे और हीरो की पोजीशन के दरमियान अगर डिस्टेंस इज greater than 8, if it is less than 8, तो फिर तो आप इस स्पीड से मूव करेंगे, ये स्पीड जो कि ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं. अदरवाइज यू विल मूव विद द स्पीड ऑफ द स्लैब, और स्लैब की स्पीड क्या थी? 0.07. ये मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ. द स्लैब स्पीड इज 0.007. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये हीरो नहीं है. हीरो कहाँ से आ गया? ट्रांसफॉर्म दैट पोजीशन. सो हीरो के लिए हमें यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट सेट करना पड़ेगा हीरो, और हीरो को हम इनिशियलाइज करा लेते हैं कोड में. हीरो इज इक्वल टू गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड, और फाइंड करके उसका नाम दे देते हैं. हमारे हीरो का नाम क्या है? हमारे हीरो का नाम है हीरो स्प्राइटशीट 8. इसका नाम हम चेंज करके हीरो कर लेते हैं. हीरो आई नहीं यार, हीरो. सो अब हम क्या करेंगे? कोड में अगर हीरो को सर्च करेंगे तो होपफुली हमें एक हीरो मिल भी जाएगा. और ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, इट्स नॉट हैप्पी विद वेक्टर 2 डॉट डिस्टेंस. वी नीड टू पास इट वेक्टर 2 एंड वेक्टर 2. ओके, सो हमें वेक्टर प्रॉब्ली 3 डॉट डिस्टेंस करना पड़ेगा. इज दैट फाइन? नो. ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन does not contain a definition of position के spelling. यार, come on. Are we good? So the distance between the hero and the enemy is less than 8. You start moving. Otherwise, you keep moving with the speed of the slab. देखते हैं ये क्या काम होता है. So I run this and I am walking. So this guy is moving only when I get closer. So other one is standing waiting and oh come on, jump. That's cool. So जैसे ही distance between me and the enemy is less, उसी वक्त आपकी enemy move करना शुरू करेगी, and that adds quite some difficulty to the game. So this fellow is only going to move. Avoid it. बच गए. Good. I'm gonna land on top. Damn it. Very toxic enemies. Even if you land from the top, they're gonna kill you. So this is how we have created enemies. इसी तरह हम B भी ऐड कर सकते हैं, या दूसरी स्ट्राइक्स भी ऐड कर सकते हैं. इसी तरह का कोलाइडर, इसी तरह का कोड, and I'll be able to reach the flag to win. So quickly एक reach the flag to win भी हम बना सकते हैं. For example, अपने ही सीन गेम ओवर को मैं कॉपी करके डुप्लीकेट कर सकता हूँ यहाँ से, और इसका नाम हम रखते हैं गेम ओवर की बजाय वेन सीन. और वेन सीन के अंदर जाके मैं जो टेक्स्ट है हमारा उसको चेंज कर देता हूँ. गेम ओवर की बजाय इस टेक्स्ट को हम चेंज कर देते हैं यू विन. ये कोड हमें कब नजर आएगा? जब हम फ्लैग को जाके हिट करेंगे. सो इसके लिए ज़रूरी ये है कि बिल्ड सेटिंग्स में हम ये विन वाला सीन भी ऐड करें, और हीरो में चेक करेंगे जब भी हीरो इज कोलाइडिंग. हीरो में कोलिजन का कोड है. यस. सो इफ यू आर कोलाइडिंग विद समथिंग कॉल्ड अ फ्लैग, तो फिर आपने जाके यू हैव टू गो फॉर द विन सीन. ये विन का सीन कैपिटल W है. या सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द केस. और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपका जो फ्लैग है इन योर मेन सीन, उसका नाम भी एक्चुअली फ्लैग होना
चाहिए किधर है जी flag. So this guy is a flag. इसका नाम starts with flag, green है, or starts with the flag. So I need to change this to a capital FLAG कम से कम. चलें जी, हम विन करने की कोशिश करते हैं. I hope I don't kill myself while trying to win the game. I'm done. Just to confirm if this is working, I'll just grab the hero. Hello, Mr. Hero. Bring him here. And when I run the game, I'm going to win. Oh, where are you? Oh, the camera is still there. Yeah, we can't do this. So maybe I can grab the flag and bring the flag here. And now this should work. No? Oh, the flag is moving. So we really need to make flag stay with the slab. Or uske liye I could probably add a script which is similar to a slab script. So इसमें अगर मैं slab script add कर दूँ तो ये slab की speed से move करना शुरू कर देगा. So when I go hit the flag, you win. So this is my game where I can win when I reach the green flag. So I should undo things ताकि ये flag हमारा वापस चला जाए और इस flag में हमारा script भी आ जाए. Yeah, this one. So now we have a game which has a game over scene, you win scene, and I'm able to avoid the enemies. And this is quite fun game. Last thing इस वीडियो में जो हम करने लगे हैं वो ये है कि हम किसी चीज़ पे थोड़ा सा म्यूजिक लगाने लगे हैं. So मेरे पास ये एक MP3 loop पड़ा हुआ था, which is going to be यहीं प्ले करके देख लेते हैं. यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से. So if I drop this guy or maybe my hero and I run this game, you will be running a game with music, no? Yes, because he has a mute है, इसको unmute करेंगे. So this is my game, a 2D game with the hero and enemies in perspective, parallax background, and it's called a 2D platformer. अगली वीडियो में देखते हैं कि इसको हम थोड़ा सा और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं.